If you don't know, please just stop your mouth. If you know, you will speak here. And I will go one by one. And you are eligible. I will ask the question, you answer me, okay? So please don't interrupt the class. So why do you have confusion about that? The question is coming from the does he speak and adding the yes or no. Why? Why do you have doubt? Have you not cleared about that? Earlier, what you are doing in the class? मस्ती. निश्चय. मैंने कितने सेंटेंस हैं? 6. ठीक है? तो इसमें अगर 6 सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें जो 2 सेंटेंस जो होते हैं डू ही स्पीक एंड डू सी इसका यूज नहीं करना. नहीं करना. क्या करना है? नहीं करना. बस ये होगा आई यू दे डू के साथ आई का यूज करना है. ठीक है? आई यू वी 10 में आते हैं. डज ही स्पीक? He doesn't speak. Does he speak? अपने जान गंदे हो गए के मार ध्यान से देखो. 2 से 6 सेंटेंस बने बट इसमें से 2 क्या है? गलत है. और 10 से भी 6 सेंटेंस हमने बताया लेकिन इसमें ये 4 गलत है. यानी कि डज का इस्तेमाल ही और सी के साथ करेंगे, आई यू वी दे के साथ नहीं होगा. ठीक है? तो इसका मतलब ये. और डू के साथ सिर्फ किसका इस्तेमाल हो रहा है? आई यू वी दे. ही सी के साथ नहीं. देन ये सेंटेंस इज रॉन्ग. ओके? तो अब यहाँ पे देखो इन दोनों मोडाल को मिला करके कितने सेंटेंस हुए? 6. ठीक है?